everyone. Let's start with class 8, chapter number 2, power play. Topic, the stone that shine. Page number 24. Use these observations to compute the following. Question is 2 to the power 9. We have generalized that n to the power a multiplied by n to the power b is equal to n to the power a plus b. Powers का क्या हो गया? Addition. Where a and b क्या है? They are the counting numbers. So here we will use this 2 to the power 9 है first one. So here you can write this as using the above n to the power a multiplied by n to the power b equal to n to the power a plus b. We will write 2 to the power n as 2 to the power 3 multiplied by 2 to the power 3 multiplied by 2 to the power 3. 3 plus 3 plus 3 powers is equal to 9. And 2 to the power 3 क्या है? 8 multiplied by 8 multiplied by 8 which is equal to, तीनों का multiplication करेंगे which is equal to 8 multiplied by 8 64 and 64 multiplied by 8 is 512. Second one, 5 to the power 7 is given. So which is equal to 5 to the power 2, 5 to the power 2, 7 चाहिए so 5 to the power 2. Powers का addition 6 हो गया multiplied by 5 to the power 1 one time. As powers 2 plus 2 plus 2 plus 1 is 7. So here 5 to the power 2 is 25 multiplied by 25 multiplied by 25 multiplied by 5 which is equal to 25 multiplied by 25 is 625 multiplied by 25 multiplied by 5 is 125. Now 625 multiplied by 125 multiplication करेंगे आंसर is 78125. थर्ड वन 4 to the power 6 है so 4 to the power 6 write 6 as in the form of 2 plus 2 plus 2. So 4 to the power 2 multiplied by 4 to the power 2 multiplied by 4 to the power 2 and 4 to the power 2 होता है 16. 4 multiplied by 4 is 16. 16 multiplied by 16 is 256 multiplied by 16 which is equal to 4096. Next question, write the following expression as power of a power in at least two different way. दो different way में लिखना है as a power of a power. In general n to the power a bracket to the power b which is equal to, you can write this as n to the power b power a which is equal to n to the power a multiplied by b which is also equal to n to the power ab. All these are equal. Using the same we will write 8 to the power 6 ways में लिखना है expression way 1 way 2. So first one 8 to the power 6. So you can write this as 8 to the power 3 bracket के बाद power 2. 3 2s are 6. In the same way you can write this as 8 to the power 2 and bracket के बाद 3. 2 multiplied by 3 is 6 using the general expression. Second one 7 to the power 15 है. So 15 को कैसे लिखेंगे? 7 to the power 3 ब्रैकेट के बाहर पावर में 5 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया? 15. इन द सेम वे 5 को पावर में अंदर लिखा हमने पहले 7 टू द पावर 5 एंड ब्रैकेट पावर 3. थर्ड वन 9 टू द पावर 14. सो 9 टू द पावर 14 के लिए वी विल ब्रेक इट एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो 9 टू द पावर 2 एंड अगेन पावर 7 और यू कैन राइट 9 टू द पावर 7 अगेन पावर 2. फोर्थ वन 5 टू द पावर 8 है. So you can write it as, for 8 you can write 2 multiplied by 4. 5 to the power 2 again power 4 and 5 to the power 4 bracket then power 2. Magical pond. Question is, in the middle of a beautiful magical pond lies a bright pink lotus. बीच में magical pond में pink lotus लगा हुआ है and the number of lotus doubles every day in this pond. हर रोज क्या होता है? लोटस जो है वो डबल हो जाते. आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ लोटस. 30 दिन के बाद पॉन्ड पूरी तरह से लोटस से कवर्ड रहेगा. सो ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल? सो ऑन विच डे इट वॉज हाफ? कौन से दिन हाफ रहेगा? इफ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय लोटस ऑन द 30th डे. अगर 30th डे पे कवर्ड है सो हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटस ऑन 29th डे. सो 29th डे में कितने लोटस से कवर्ड रहेगा? सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे. हर दिन लोटस डबल हो रहे सो द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे.
सो हाफली कवर्ड कब होगा 29th डे पे. तो राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है व्हेन द लोटस वाज फुल्ली कवर्ड. फुल्ली कब कवर्ड है एंड हाफ कब कवर्ड है, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सॉल्यूशन. सो गिवन क्या है, द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे. ऑन द 30th डे द पॉन्ड इज फुल्ली कवर्ड गिवन है. सो 29th डे में द पॉन्ड मस्ट बी हाफ फुल. सो ऑन 29th डे पॉन्ड इज हाफ कवर्ड. सो नंबर ऑफ लोटसेस कैसे निकालेंगे, डे 1 विच इज इक्वल टू 2 to the power 0. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो डे 2 में क्या होगा 2 विच इज इक्वल टू 2 to the power 1, डबल हो गया. देन डे 3 2 to the power 2. डे 4 का डबल 2 to the power 3. द सेम वे डे 29 पे द पावर डे 1 पे 0 है, डे 2 पे पावर 1 है. सो 29 पे पावर क्या रहेगा, पावर 28. ऑन डे 30 2 to the power 29, 1 less. So answer is the number of lotuses when the pond was fully covered is equal to 2 to the power 29 on 30th day, and the number of lotuses when the pond was halfly covered is 2 to the power 28 on day 29. Next question is simplify 10 to the power 4 अपॉन 5 to the power 4 and write it in exponential form. exponential form में लिखना है and in general we can show that m to the power a upon n to the power a which is equal to m upon n to the power a. so here इसी को use करेंगे 10 to the power 4 upon 5 to the power 4. in general we will write 10 upon 5 to the power 4 and 10 upon 5 है, 5 1s एंड 5 2s, 2 to the power 4 and 2 to the power 4 answer is 2 to the power 4 using m to the power a upon n to the power a equal to m to the power m upon n to the power a. next is how many combinations. combinations बताना है. फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व गिवन है. फॉर सेकेंड वी विल सी रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस. रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस है, 2 हैट्स है, 3 पेयर्स ऑफ शूज है. हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस्ड अप. कितने डिफरेंट वेज में वो ड्रेस्ड अप कर सकता है. सो सोल्यूशन 7 ड्रेसेस है. सपोज इफ यू पिक 1 ड्रेस फ्रॉम द 7 ऑप्शन, इसको हम किसके साथ पेयर करेंगे, पेयर इट विथ 1 हैट फ्रॉम 2 hats and then we will choose 1 pair of shoes from the 3 shoes. Each piece is independent, so we will multiply 7 multiplied by 2 multiplied by 3 which is equal to 42. So 42 different ways can Roxy dress up.